ये बड़ा कि उसको 1 में से बड़ा माइनस होना पड़ेगा, उसको बड़ा 1 में से माइनस होना पड़ेगा बड़ा, so this will result into 1 minus 1 minus probability of 0. अब तुम लोग मुझे बताओ बड़ा, 5 वैल्यू बड़ा फाइंड करना अच्छा है कि एक? बनिए की तरह सोच फटाफट। एक वैल्यू बड़ा फाइंड करके 1 में से क्या कर देने का, माइनस। सिंस probability of at least one egg, which is equal to 1 minus probability of number। समझा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन बड़ा फाइंड कर सकते हो तुम लोग। वन बाई टू रेज टू 0। चलो आंसर बताओ मुझे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater or equal to 1, it is 31/32। एंड फिर उसके बाद आगे लिखो therefore the number of families, number of families out of 320, of 320, having at least one boy, having at least one boy is given by is given by
f of x is equal to capital N into p of x. 320 into 31 upon 32. Answer will be equal to but this is not the final answer. Therefore, therefore, the percentage of families, the percentage of families having at least one boy is 310 upon 320. 200. Answer comes to 96.875%. चलो all important sums बड़ा gets over. कोई डाउट पूछना है? Let me start with the last concept, which is called to be as mode of a binomial distribution. Mode of a binomial distribution. And you mark this as very important. Already हम लोग ने measures of central tendency में mean, median and mode के बारे में पढ़ा था. We have studied about mean, median and mode. And that what we have studied, what is mode?
What is mode? बड़ा क्या explain किया था मैंने? Mode is defined to be as that value of a variable which repeats for maximum number of time, which repeats for maximum number of time. बराबर? But right now, but here we are not talking about that mode. Here, but we are not talking about that mode. Here, with respect to binomial distribution, mode is defined to be as that value of a variable which maximizes the probability function. अब लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था. You have studied about maxima and minima. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? हम लोग फाइंड करते थे कि एट विच पॉइंट द फंक्शन इज मैक्सिमम, एट विच पॉइंट द फंक्शन इज मिनिमम, बाय यूजिंग द डिफरेंट टेस्ट हम लोग क्या करते थे तो यहाँ पे भी मोड जो है वो वही है कि मोड इज डिफाइंड to be as that value of a variable. Mode is defined to be as that value of a variable which maximizes the probability function, which maximizes the probability function. Again, so here in this case, what is the working rule? Working rule to find the mode of a binomial distribution. Let x be a binomial variable with the parameters n and p. And now with n and p, okay, but you will require the value of compulsory. You will have to find
the value of whole n plus 1 into a p, and after that there arise two possibilities. Number one is whole n plus 1 into p is an integer. Whole n plus 1 into p is a non-integer. Non-integer. And now, when I'm talking about the term, it is an integer. पढ़ाई के Integer लिए means मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का integer. साथी। Integer means it is taking a complete values. It is taking a complete values, integral values. क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है सब लोग को? Again, so here in this case, let me assume that x is equal to k. Let k be an integer. Let k be an integer. But when whole n plus 1 into p, when it becomes an integer, so in that case, there arise the two values of mode. There arise the two values of mode, and that two values of mode which are being obtained. That is x is equal to k and x is equal to k minus 1. Working देख पड़ेगा यहाँ पे. When whole n plus 1 into p, when it becomes an integer, when it becomes an integer, so there arise the two values of mode, and that two values of mode, they are being obtained at two different points, and that two different points are one is x is equal to k, and other one is x is equal to k minus 1. One is x is equal to k, another one is x is equal to k minus 1. है कि नहीं? तो ये देखो, for example, suppose a whole n plus 1, a whole n plus 1 into p, if it is equal to 10. तो जो मुझे बताओ
What will be the two values of mode? तो यहाँ पे बड़ा k का जो वैल्यू है वो बड़ा 10 है। Very good. The two values of mode, it will be 10 and 9. चलो अब तुम लोग मुझे आंसर दो। If whole n plus 1 into p, if it is equal to 12, what a mode will be equal to? Correct. If whole n plus 1 into p, if it is equal to 7, correct. Answer bada will be 7 and 6. बस stop. बट अब मुझे ये बताओ कि suppose if I say that in the given binomial distribution there are two modes. So what you will call this type of distribution as? Very good, Kusum. Abhi, very good. Okay. It has been called to be as a bimodal distribution. It is called to be as a bimodal distribution. Very good. अब यहाँ पे when I am saying that okay, whole n plus 1 into p, but if it is a non-integer, non-integer means बड़ा वो complete values नहीं लेगा बड़ा. It will take a value which is in the decimal point. तो यहाँ पे बड़ा सबसे पहले क्या करना है ये देखो, वही वैल्यू को बड़ा तुम्हें स्प्लिट करना है बड़ा. तो डेसिमल वैल्यू जो होगा ना बड़ा डेसिमल, उसको ही बड़ा तुम लोग को स्प्लिट करना है एज बड़ा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू प्लस बड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू. आउट ऑफ विच बड़ा only the integral value will be taken into a consideration. Fractional value but it will be ignored. उसे consider नहीं करना है. Indicating that there is only but one mode. There is but only one mode. And that distribution would be it is called to be as unimodal distribution.
अब ये देखो, whole n plus 1 into p, if it is equal to 7.5, 7.5 can be splitted as 7 plus 0.5. इंटीग्रल वैल्यू बेटा खाली कौन है 7, फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा कौन है 0.5, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा मैडम, तो आंसर बेटा इट विल बी ओनली 7. चलो अब मुझे बताओ मैडम, अगर वैल्यू होता 9.65 तो मोड क्या होता 4.35. फोर्टीन पॉइंट फाइव चलो वेरी गुड बेटा, चलो मोड वाला पार्ट ऑल्सो गेट्स ओवर. चलो अब मुझे एक एमसीक्यू का आंसर बताओ बेटा, कि जो मोड है बेटा, मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इट इज ऑलवेज ऑप्शन ए यूनी मॉडल, ऑप्शन बी बाई मॉडल, ऑप्शन सी ए और बी, डी नन ऑफ दिस. Correct. The answer is option C. For finding the value of mode, you require the two values, and that two values are n and p. Without n and p, ये सॉल्व करना बड़ा बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. मस्त बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो एक. मैंने नोट्स में भी सब दिया हुआ है, नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है सब ये. And now after completing binomial distribution, we are going to start with the second type of discrete theoretical distribution, which is being called to be as Poisson distribution, which is called to be as Poisson distribution of
दिमाग जो है बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा सोचेगा तो जरूर कि सर instead of means in spite of studying but a binomial distribution, why it is necessary that we have to study about the Poisson distribution madam? दिमाग सोच रहा है बेटा ये सब